हम लोग जहाँ भी जा रहे थे टॉय ट्रेन देखने। एक्चुअली एक नॉर्मल ट्रेन है, बस उसका लुक थोड़ा सा इन लोगों ने फैंसी बना दिया और उसका नेम है टॉय ट्रेन करके ऐसे। बट वो एक टिपिकल कहा जाए तो एक ट्रेन नॉर्मल है, उससे पैसेंजर जाते हैं, टिकट लेते हैं 500-600। इवन IRCTC के वेबसाइट पे वो है। तो उसका कुछ टाइम फिक्स है 2 o'clock 5 o'clock। सो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि वो कुनूर तक जाती है एंड बट आपके पास टाइम हो तो आप उसमें बैठ सकते हो, पहाड़ों का मज़ा लेते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। बोट हाउस है, ओके। बोटिंग तो करनी नहीं है हमें, तो हम निकलते हैं। इसके बाद आगे से पूरी भीड़ है वहाँ पे। ग्लव्स पहन लेना चाहिए, मुझे ठंडी लग रही है। दस किलोमीटर यहाँ से डोडाबेटा पीक निकलते हैं। Guys, see where I am now. I'm here at tea garden. Just see the view. Looks so beautiful. ऊटी में ये ऐसे जा रहे थे हम लोग डोडाबेटा पीक पे। सो वहाँ पे रास्ते में जाते समय अभी ये पड़ा, तो रुक गया मैं देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या है। वाह क्या व्यू है यहाँ से, गजब। टी की पूरी फार्मिंग होती है। तो इंडिया के पार्ट्स में वीट क्रॉप्स लगाते हैं यहाँ पे। हाँ फ्रॉम टी की फार्मिंग। बाइक पार्किंग देखो, बाइक नहीं होता आता है क्या तमिलनाडु में? बाइक से बहुत कम लगाते हैं, सब कार से आते रहते हैं।
I'm going to Tea Park. It's a place at a distance of 3 kilometers from Doddabetta viewpoint. Let me tell you, that time I forgot to tell. Here, while coming to Doddabetta viewpoint, you have to give 10 rupees as an entry fee. Then 20 rupees there, so total 30 rupees they will take. 10 rupees to enter this gate and 20 rupees there. Okay, so now I'll take right and I'm going to you can see Ooty is on left, and I have to go to Doddabetta Tea Park. No, sorry, Doddabetta view I have done, and I'm going to Tea Park. ये क्या है? हाईलैंड होटल. ओके, अच्छी जगह पे, पहाड़ पे. कुछ दिख जाए खाने की जगह. भूख लगी है. ओह शिट, कच्ची सड़क है क्या यहाँ से? नहीं, सिर्फ इतना तो लैंडस्लाइड हुआ है या बरसात से गिर गया होगा, इसे काट रहे हैं, इसको बना रहे हैं. ऐसे क्रॉस पे चलाने में तो मज़ा ही आती है बाइक, बट सब नॉनवेज लग रहा है. अब पार्लर कुछ खाते हैं. आ गए हम टी पार्क पे. चलाते हैं गाड़ी, कोई नहीं है. बेहतरी था. थैंक यू. वो कैमरा रोको. हाँ, टेलर. ओके, आई विल स्विच ऑफ. वाह, इसने बनाया टी पार्क. आई थिंक इट्स नॉट अ गवर्नमेंट पार्क. आराम से बैठो, गोल से बैठ के आराम से पहाड़ों को देखो. चलता हूँ जल्दी से, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 5:30 तक हमें निकलना होगा यहाँ से. अंधेरा होने से पहले कोशिश करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये बाउंड्री, फिर वो बाउंड्री, दोनों. ये टोटल इन लोगों ने राउंड में बना दिया है. अच्छा खासा पार्क, और फीस लेते हैं, तो इससे इनकी इनकम होती है. अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, मेरा पहाड़ दे सकते हो. तो फिर मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ, और बाकी पिक्स आपसे शेयर करता रहूँगा, और वीडियोस भी राइड के एंड में. थैंक यू.
सो यहाँ तो हमारा हो गया घूमना फिरना, चलते हैं वापस ऊटी। दिन सो गाइस हमारा आज का, हम लोग शाम के 6 बज रहे हैं, ठंडी बहुत है, तो आज का डे एंड करते हैं। मीन्स अपने राइड्स और प्लेसेस को विज़िट करना। और रूम पहुँचते पहुँचते 6:30 हो जाएगा। ये एग्जैक्टली 6 बज चुके हैं अगर आप मेरे इस फ़ोन में देखो तो। यहाँ से 20 मिनट्स दिखा रहा है, पार वाला रास्ता है 6.3 किलोमीटर्स। सो इतनी देर में हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। बढ़ाते हैं स्पीड और निकलते हैं ऊटी की तरफ। ऑलरेडी ऊटी में है बट टाउन में जा रहे हैं हम लोग। क्या है? जंगली भैंसा।